जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं लेक्चर 29 बिज़नेस कम्युनिकेशन इंग्लिश 301 का। तो ये लेक्चर है बिज़नेस रिपोर्ट्स। ये लेक्चर बेसिकली बिज़नेस रिपोर्ट्स पर ही है। इसी के गिर्द घूमेगा कि बिज़नेस रिपोर्ट्स क्यों लिखी जाती हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है और ये इनके पॉइंट्स क्या हैं, ये कैसे लिखी जाती हैं, इनकी जो है टाइप्स क्या हैं, ये सारा कुछ इसमें होता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं, ये है हमारी डेफिनेशन। A business report is an impartial, objective, planned presentation of facts to one or more persons for a specific business purpose, or an orderly, objective message used to convey information from one organizational area to another, or from one institution to another, to assist in decision making or problem solving. Next है ये report, purposes of reports हैं ये purpose of report, common examples, distribution। तो यहाँ पर जो है to monitor the control operations। कॉमन एग्जांपल इसकी क्या है, प्लान्स, ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स, पर्सनल एक्टिविटी रिपोर्ट्स। Distribution, internal reports move up or down, requiring recurring basis. External reports to go to a selected audience to implement policies and procedures. Lasting guidelines, position papers. Internal reports move downward or on a non-recurring recurring basis. To comply with regulatory requirements, reports IRS, SEC, EOC, Human Rights Commission. External reports are sent on a basis to obtain new business or findings, sales proposals. External reports are sent on non-recurring uh, basis. Formal or informal. Formal reports are carefully structured. They stress objectivity and organization, contain much detail, and are written in a style that tends to eliminate such elements as personal pronouns। एंड ये है हमारे इनफॉर्मल। Informal reports are usually short message with natural, casual use of language. The internal memorandum generally can be described as an informal reports। ये हमारे यहाँ शॉर्ट और लॉन्ग रिपोर्ट्स हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये
जो हमारे फॉर्मल रिपोर्ट्स हैं ये बहुत केयरफुली जो है इसको स्ट्रक्चर किया जाता है, अच्छे से इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल जो ऑब्जेक्टिव होता है इसके सिलसिले में हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस का, और वो पर्सनली जो है बहुत अच्छे से उसको लिख के तो सबको जो है वो इन्फॉर्म करते हैं और जो है उनको अच्छे से लिखते हैं। और उसके बाद जो इनफॉर्मल रिपोर्ट्स हैं ये यूजुअली जो है एक मैसेज के तौर पे होता है, ठीक है। ये सब एम्प्लॉयज़ को भी दिया जा सकता है और जो है इसके लिए जो है कैजुअल लैंग्वेज यूज़ की जाती है और इसमें कुछ जनरल मेमोरेंडम जो है वो इसमें ऐड किए जाते हैं। तो ये एज एन इनफॉर्मल रिपोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ शॉर्ट एंड लॉन्ग रिपोर्ट्स। One page memorandum is obviously short, and a term paper of 20 pages is obviously long, ठीक है। और नेक्स्ट है ये व्हाट मेक्स अ गुड बिजनेस रिपोर्ट। बिजनेस रिपोर्ट्स आर लाइक bridges spanning time and space. Organizations use them to provide formal, verifiable link among people, places, and time. Some reports are needed for internal communication, others are vehicles for corresponding with the outsiders. Some are required as a permanent record. Others are needed to solve an immediate problems or to answer a passing question. यहाँ पर हमारी जो फॉर्मल रिपोर्ट्स के जो स्टाइल क्या क्या है, इनफॉर्मल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, फॉर्मल। इनफॉर्मल, आई रिकमेंडेड दैट द स्प्रिंग campaign concentrate on newspaper and television advertising. नेक्स्ट है हमारे पास letter reports, memo reports, and deciding on approach. उसके बाद है types of reports हैं, answer or request of for information, report progress, make recommendations, state facts, communicate ideas, send statistical data, explain a trend within an organization. And next two types और भी हैं ये informational memorandum reports, analytical memo reports. informational memorandum reports के जो कुछ parts हैं वो कौन कौन से points inform, summarize some information requested, organize information objectively, make recommendations. Conference reports, topics for reference reports range from summarize of personal sales called confidences to write-ups of meetings attended by hundreds of persons. For example, a credit or a collection manager or account executive may make similar reports after conferences with clients.
progress reports, introduction, description of accomplishment during the reporting period, unanticipated problems, plans for the next reporting period, summary, periodic reports. इसकी कौन कौन सी हैं? सेल्स रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, एनालिटिकल मेमोरेंडम रिपोर्ट्स। अब ये जो है यहाँ पर ये हैं इंफॉर्मेशनल मेमोरेंडम रिपोर्ट्स, उसके बाद ये वाला, ये इसको जो है आगे डिटेल दी जा रही है, एनालिटिकल मेमो रिपोर्ट्स। कौन सा अभी रीड किया था? तो यहाँ पर ऑन द काजेस ऑफ डिक्लाइन इन सेल्स वॉल्यूम, on the evaluation of a person before recruitment, on individuals being considered for promotion, on the analysis of a particular book. Next, while organizing memo reports, take care of the following: itemize the information, present the fact with absolute fairness and accuracy. Be careful not to mix your opinion with the facts you report. Reserve your comments for your conclusions and recommendations. Lecture 30, बिजनेस रिपोर्ट्स। ये अब जो है कंटिन्यूड है, ठीक है। पहले भी हम बिजनेस रिपोर्ट्स के हवाले से ही पढ़ चुके हैं। लेटर रिपोर्ट्स जी, तो लेटर रिपोर्ट्स में क्या क्या हैं? इसकी टाइप्स, 2 टाइप्स हैं इसके: इंफॉर्मेशनल लेटर रिपोर्ट्स, एनालिटिकल लेटर रिपोर्ट्स। जी, तो पहले हमने ये देखी थी मेमोरेंडम रिपोर्ट्स, अब हैं लेटर रिपोर्ट्स, ठीक है। इंफॉर्मेशनल लेटर रिपोर्ट्स इंक्लूड, अब जो है इंफॉर्मेशनल लेटर रिपोर्ट्स के आगे डिटेल है। Staff report to a financial officer regarding issues concerning personal turnover in the sales department. Report in reply to the inquiry about product and services provided by your company. तो यहाँ पर ये है कि जो स्टाफ है वो रिपोर्ट कर रहा है, जो ऑफिसर है, फाइनेंशियल ऑफिसर, उसको कुछ इश्यूज़ के बारे में, ठीक है। तो वो उसने पर्सनली उससे जो है वो रब्ता करता है, उसको लेटर जो है रिपोर्ट वो सेंड करता है। उसके बाद ये इसमें और क्या दूसरा क्या है कि वो एक किसी भी प्रोडक्ट की, सर्विसेज की जो है वो इंक्वायरी करता है, जो कि किसी को प्रोवाइड की गई हैं कंपनी की तरफ से। उसके बाद एनालिटिकल रिपोर्ट्स, ये इसमें क्या किया जाता है? कैलकुलेशंस ऑफ फाइनेंशियल रेशोज ऑफ company in order to control its financial condition,
के जो कैलकुलेशंस की जाती हैं फाइनेंशियल रेशोज़ की, और जो कंपनी की जो होती हैं ना फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रेशोज़, उनके बारे में कि जो इस साल कौन सी रेशो है उसकी फाइनेंशियल्स की, और लास्ट ईयर कौन सी थी। इस तरह से उसके जो है की जाती हैं कैलकुलेशंस, और ताकि वो जो है उन्हें जो है फाइनेंशियल कंडीशंस को कंट्रोल किया जा सके। फॉर्मेट क्या है इसकी? डेट, इनसाइड एड्रेस, सैलूटेशंस, बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर, रेफरेंस सेक्शन। जी, here are some common errors to avoid। तो ये कुछ errors हैं: lack of objectivity, hasty generalization, hidden assumptions, either or scenarios, false casual relationships, backed questions, personal attacks or appeals to popular prejudice। तो ये हैं 7। उसके बाद है मेन फीचर्स टू ऑफ द रिपोर्ट्स। तो इसमें मेन जो फीचर्स हैं वो कौन से हैं? द ओपनिंग, introduce the subject of reports, indicates why the subject is important, reviews the main ideas and the order in which they will be covered. Organizational plan for short informal reports। तो यहाँ पर उसकी जो है फॉर्मेट है, फिर उसके बाद है ओपनिंग, उसके बाद बॉडी, फिर एंडिंग। तो ये चीज़ें उसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर single space the text, double space between paragraphs, use heading when where helpful, call attention to significant information by setting it off visually with lists or intentions, include visual aids to emphasize and clarify the text। तो यहाँ पर करना है considering these problems, I propose that the buildings of the school should be shifted to a main road, permanent faculty should be appointed। तो ये कुछ जो है प्रॉब्लम्स है उसके हवाले से फिर जो है आगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है ये दिया गया है। उसके बाद है ये, तो यहाँ पर है इसमें भी टू मीन्स जिसको लिखी जा रहा है लेटर रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम के जिसने भेजना है उसको, उसके बाद डेट है, फिर सब्जेक्ट है मेजर मेजर अकाउंट्स, सेल्स प्रॉब्लम्स। Major accounts sales dropped 12%, sales went up
7%। ये पता नहीं मैंने क्यों लगाया था। Next, recommendations areas may be relocated. Coordination cell may be set up in the head office to monitor the working of these original offices. A bulletin giving area-wise sales achievements of every region may be circulated। जी, तो हमारे ये हो गए हैं 29 to 30 लेक्चर्स। अब हम नेक्स्ट में करेंगे 31 से स्टार्ट। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।